Good morning to all of you. Today we are going to continue this chapter, Movement of Ocean Water. In our yesterday class, we discussed about the tides and types of tides. What do you understand by tides? So we discussed that tides is a rise and fall of the sea level once or twice of a day. And what are the forces which are responsible for the origin of tide? We discussed about the gravitational pull of moon, sun. We discussed about the centrifugal force. Those are responsible for the origin of tides. And we discussed about the meaning of the centrifugal. That what do you understand by centrifugal force? That centrifugal force tend to move an object away from the center. That is the centrifugal force. Yes, in yesterday's class we discussed this figure 14.2. You can see the tidal bulge that is caused by the gravitational pull of moon and sun. In the second picture, you can see the tidal bulge caused by the centrifugal force, and the third one, the resultant two bulges in this picture. After that, in our last class, we discussed about the types of tide on the basis. First, we discussed on the basis of frequency, and the first one that is semi-diurnal tide, second one, and third one that is mixed tide. Semi-diurnal tribes are the tides, two high tides and two low tides each day. So two high tide and two low tides each day, and these tides are of same height. In diurnal 2, there is one high tide and one low tide each day, and height is same. But in mixed tides, there is variation in height, and that's why the name is mixed tide. After that, we discussed the classification of tide on the basis of the positions of sun, moon, and the earth, in which we discussed spring tide and neap tide. Spring tide, in which when the sun, moon, and the earth are at the straight line, जैसे हमने उस फिगर 14.2 के अंदर डिस्कस किया था, तो 14.2 में जैसे वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तीनों, तो फिर जो टाइड बनेगा वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा हाइट में ज्यादा बनेगा. सो दैट इज स्प्रिंग टाइड. ओके, कब होता है? न्यू मून और फुल मून, अमावस और पूर्णिमा. सेकेंड वन दैट इज नीप टाइड. एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, इसका जो टाइड बनेगा वो जनरली जो इसकी हाइट होगी वो एवरेज टाइड से थोड़ी कम रहती है. और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके सन की पोजीशन और मून की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट लाइन में अर्थ के ना होते हुए किस पोजीशन के अंदर आ जाता है? राइट एंगल. तो फिर क्या होता है, ये एक दूसरे से काउंटरैक्ट करने लग जाता है, और जितना ग्रेविटेशनल पुल लगना चाहिए उतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगता है. उसके बाद में हमने टू पोजीशंस की बात की थी, पेरिगी, एपोगी, पेरिलियन एंड एफिलियन. Perigee is the situation in which the moon is closest to the earth. Epigee when moon is farthest to the earth. तो जब सबसे ज्यादा closest होगा तो आपका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा. ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा तो फिर आपका टाइड की हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी. In aphelion, when the earth is closest to the sun, when it happened on 3rd of January, and there also the gravitational pull is high. In that case, the tidal range is so much greater than the average जो tide बनता है उससे. एफिलियन के अंदर सन और मून के अंदर जो पोजीशन होती है, सॉरी, सन और अर्थ के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो फार्टेस्ट होता है 4 जुलाई को. तो यहाँ पे जो आपका टाइडल रेंज बनती है वो एवरेज से क्या बनती है? कम. ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था. इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अप टू दिस. Today we are going to start our next topic, that is importance of tides. We discussed about what do you understand by tide, and now we are discussing about the importance of tide. So since tides are caused by the earth, moon, sun position which are known accurately, the tides can be predicted well in advance. So as we all know that tides are originated due to the gravitational pull of sun, moon, and also centrifugal force. We all know about this phenomenon. So we can predict means we can estimate about the tides, that उनका कितने इंटरवल, कितने पीरियडिक में कौन सा, जैसे हमने बोला स्प्रिंग टाइड कब होगा, तो स्प्रिंग टाइड आपका फुल मून और न्यू मून को होता है. ये प्रिडिक्शन ही तो है.
नीप टाइड कब होगा? तो नीप टाइड जो है 7 days आफ्टर द स्प्रिंग टाइड होता है। तो ये क्या है? ये भी प्रिडिक्शन है, एस्टिमेट करते हैं हम फ्यूचर इवेंट के बारे में। क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट, बिकॉज वी आर नाउ इनफ डेवलप, हम इनफ डेवलप्ड हैं कि हमें सन मून इनकी पोजीशंस एकदम क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग, द this helps the navigators and fishermen plan their activities. टाइड्स हेल्प द नेविगेटर, हाँ नहीं, ये जो हम पोजीशंस को समझते हैं, इससे नेविगेटर्स और फिशरमैन को अपने एक्टिविटीज को प्लान करने में क्या मिलता है? हेल्प। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेविगेटर? नेविगेटर मींस अ पर्सन हु नेविगेट्स, अ पर्सन हु ट्रेवल ओवर वाटर, he is navigator, उसको क्या बोलेंगे हम? नेविगेटर। और फिशरमैन, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन कैचिंग फिश, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पर्सन है, दैट इज फिशरमैन। अब बताइए टाइड्स का उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैं अगर बात करता हूं तो देखिए, कुछ एक हैवी शिप्स होती है, हैवी शिप्स होती है जो जिसको वाटर की, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कोस्टलाइन की तरफ, ओशियन से कोस्टलाइन की तरफ आते हैं, वैसे वैसे जो है डेप्थ क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। सी की डेप्थ क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे हम किसकी तरफ आते हैं? कोस्टलाइन की तरफ आते हैं। एज नेविगेटर्स मूव फ्रॉम ओशियन टू द कोस्ट, द डेप्थ ऑफ द सी इज समवॉट रिड्यूस्ड, डिक्रीज, तो वो डिक्रीज होती जाती है। तो जो हैवी शिप्स होते हैं वो पूरे कोस्ट हार्बर तक नहीं आ पाते हैं, बट ड्यू टू द हाई टाइड के अंदर भी, एज वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग हाई टाइड द सी लेवल राइजेस, द सी लेवल राइजेस ड्यूरिंग द हाई टाइड, एंड इट हेल्प्स द शिप्स टू कोस्ट पे जाने के लिए क्या करती है? वो हेल्प करती है। तो दिस इज द रोल ऑफ टाइड्स फॉर द नेविगेटर, दिस इज द रोल ऑफ टाइड्स फॉर द नेविगेटर। द नेक्स्ट वन, दैट इज फिशरमैन। फिशरमैन के लिए व्हाट इज द रोल ऑफ टाइड्स फॉर द फिशरमैन? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स फॉर फिशरमैन, तो फिशरमैन के लिए ये है कि ड्यूरिंग टाइड, टाइड अपने साथ में क्या है? बहुत सारी फिशेस जो है वो कोस्ट तक लेके आ जाती है, कोस्ट के पास लेके आ जाती है। ह्यूज नंबर ऑफ फिशेस कोस्ट के पास लेके आ जाती है, तो फिशरमैन के लिए इजी होता है उन्हें कैच करना। सो दैट इज द रोल ऑफ टाइड्स फॉर द फिशरमैन। नाउ नेक्स्ट वन, द टाइडल flows are of great importance in navigation. Tide heights are very important, which I discussed, that especially harbor near river or within the estuary having shallow water, शैलो वन, वेयर देयर इज अ एंट्रेंस में कोई बैरियर हो, जैसे मान लीजिए शिप है, शिप को पूरा हार्बर पर जाना है, लेकिन बीच में क्या है? थोड़ा सा बैरियर है, डेप्थ कम है, तो फिर ड्यूरिंग हाई टाइड वो इजीली जा सकता है। सो हाई टाइड हेल्प्स द शिप्स टू reach at the harbor, which prevent ships and boat from entering into harbor, which कौन prevent कर रहा है? shallow bars। तो shallow bars से फिर कैसे छुटकारा मिल सकता है? high tide के during। next one, tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from the river estuaries. So as we all know that we discussed about the tide currents. So when these tide currents are flowing, so the silt or the polluted material which are deposited just at the coastline is carried by the tide। वो टाइड क्या करेगा? उस मटेरियल को दूर ले चला जाएगा करंट के थ्रू। सो ये भी इसका एक रोल है। नेक्स्ट, as we all know about the tidal energy, that tides are used to generate electric power, and here is the example: in Canada, France, Russia and China, tides are used to generate electric power. A 3 megawatt, yes, in India too, a 3 megawatt tidal power project at Durga Duni in Sundarbans of West Bengal is underway. So here also in India, tidal energy is generated through tides. So this is somewhat the importance of tide. You can आप अपनी जब कॉपी में करें तो भी आप देख सकते हैं सीधा that importance of tides, and tides helps the navigators, tides help the fishermen, tides generate electricity. So these are some of the importance of tides. The next one, that is ocean currents. What do you understand by ocean currents? So as we all know, water in motion, water, when a huge amount of water flows, that is current, and that water is of ocean, that's why it is known as ocean currents. So ocean currents are like river flow in oceans, we can say river flow in oceans। जैसे river है एक definite
एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो वाटर का लेके एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर रिवर जो है फ्लो होती है, जस्ट लाइक दिस ocean water also flows in a definite direction with a huge amount of water, with a large volume of water. So we can say that ocean currents are like river flow in oceans. Ocean currents represent a regular volume of water in a definite path and direction. So look at this picture. For this, you can see the Gulf Stream. The Gulf Stream is flowing. You can see the ocean current is flowing in a definite direction. सभी की एक definite direction. Just look at this. Look at the current which is at the 0 degree. That is equatorial current. इक्वेटोरियल करंट को जब आप देखेंगे तो इक्वेटोरियल करंट को आप जब देखेंगे तो वो क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, डेफिनेट पाथ के अंदर जा रहा है. सो वी कैन से दैट ओशन करेंट्स रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर in a definite path and direction. Now ocean currents are influenced by two types of forces mainly. अब ऐसा होता क्यों है, क्यों ये current flow हो रहा है, why this current is flowing? As you all know that विंड, जैसे हमारा टाइड्स जो है, टाइड्स का भी कोई रीजन था. टाइड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून आर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ टाइड्स. ठीक है, winds are growing due to the changes in the atmospheric pressure. Just like that, there are some forces which are responsible for these currents. So the first one that are primary forces and the second one that are secondary forces. So primary forces are those forces which initiate the movement of water, and as we already discussed that oceanic water is dynamic, not static. So the forces which start that movement, which make the water to flow, that is primary forces, and the secondary forces that influence the currents to flow. तो अब ये जो फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, that is secondary forces. So let's discuss first the primary forces. The first one, that is heating by solar energy. So heating by solar energy, just like the solar energy role on the land surface, that the area which receives high solar energy are heated up, the air then become light और वो upward move करेगी, expand हो जाएगी, low pressure create हो जाएगा. Just like that also, अगर सोलर एनर्जी से अगर हीटिंग अगर वाटर होगा तो वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. वाटर हमेशा क्या करता है, लाइट हो जाता है, एक्सपेंड करता है, इवेपोरेट होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो मूव करेगा. नेक्स्ट वन, विंड. अगर मान लीजिए विंड जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है तो वो वाटर को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, वेव के थ्रू वो भी फ्लो करवाएगी. नेक्स्ट वन जो है वो है ग्रेविटी. ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी ये आपका होता है फ्लो. लास्ट वन, दैट इज कोरियोलिस फोर्स. और अभी हम सभी को क्या करेंगे, एकदम एक एक को डिस्कस कर ले. कोरियोलिस फोर्स, द फोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ व्हिच डिफ्लेक्ट्स द विंड. जो विंड को डिफ्लेक्ट करता है, जस्ट लाइक दैट इट आल्सो डिफ्लेक्ट द वाटर करंट, ओशियनिक करंट्स को भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है. आपका कोरियोलिस फोर्स वाटर और ओशियनिक करंट्स को भी डिफ्लेक्ट करता है. Okay, so let's start with the heating. So heating by solar energy, heating because sun is the ultimate source of heating on earth. So heating by solar energy causes the water to expand. So just like the wind, when wind heated up, it expands, it becomes light. Just like that, the water also expands. So that's why the near the equator ocean water is about 8 centimeter high in level than in the middle latitude, because in middle latitude the water temperature is somewhat low than the water in equator area. So that's why near the equator the ocean water is somewhat 8 centimeter higher in level. So sea level है उसका क्या है, higher रहता है comparison to the middle latitude. And middle latitude, which are the middle latitude, that is 23.5 degree north and 23.5 degree south to 66.5 degree north and 66.5 degree south. So these are the middle latitudes. So heating by the solar energy causes the water to expand, and that's why the 8 centimeter high level of the sea level at the equator than at the middle latitudes, because the water at the middle latitude is somewhat lower in temperature than at the equator. So this causes a very slight gradient.
and water tend to this causes a very slight gradient and water tend to flow down a slope. What do you understand by gradient? We already discussed the gradient is a slope, is a incline. अब आप खुद देखिए, जब एक तरफ से वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा और एक तरफ से जब नीचे होगा तो स्लोप बन गया, और स्लोप बनेगा तो वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा। वाटर क्या करेगा? फ्लो करेगा, पूरा बैलेंस होने के लिए, सी लेवल को एक लेवल पे लाने के लिए। बिकॉज सी लेवल में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया वर्ल्ड लेवल में। इक्वेटोरियल एरिया के अंदर सी लेवल क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर हायर, जबकि मिडिल लैटिट्यूड के अंदर 8 सेंटीमीटर से लोअर। तो ये जो स्लाइड ग्रेडियंट बना है, ग्रेडियंट मीन स्लोप इंक्लिनेशन जो बना है, तो अब जो है वाटर क्या करेगा? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करेगा? फ्लो होगा। सो वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन दी स्लोप, और स्लोप यहाँ पे क्या? ग्रेडियंट। सो वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन दी स्लोप। Next one, that is wind blowing on the surface of the oceans. That is the second rule. Wind blowing on the surface of the ocean pushes the water to move. तो जो विंड आपकी सरफेस पे चल रही है, जो नॉर्मली लैंड सरफेस और ओशियन पे जो विंड चल रही है, वो भी क्या करती है? पानी को क्या करेगी? मूव करेगी, पुश करेगी। क्योंकि देखिए, मैं अपना बोलते हैं या आप भी अपना देखिए, मैं ना, आंधी आ रही हो और आप जो है अगर रोड पे हैं, तो अगर पीछे से आंधी आ रही है तो आपको क्या करेगी? थोड़ा सा वो पुश करती है, और आगे से आ रही है तो फिर आपको चलने के लिए ज्यादा थोड़ा क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है। तो समवॉट इट पुशेस. So just like that, wind blowing on the surface of the ocean, that also pushes the water to move. Now, friction between the wind and water surface affects the movement of the water body in its core. Friction, what do you understand by friction? Frictional force we discussed in our last chapter, I think. Frictional is the rubbing of one object or surface against another. Friction is rubbing of one object or surface against the other. So friction between the wind and the water surface affects the movement of water body in its course. जितना ज्यादा फ्रिक्शन अगर मान लीजिए कम होता है, तो फिर स्पीड क्या रहेगी? वाटर फ्लो की, ओशन करंट की ज्यादा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ओशन करंट की आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। So gravity tends to pull the water down the pipe. Gravity tends to pull the water down the pipe and create gradient variation. So gravity जो है वो आपका water जो है, जो आपका फ्लो हो रहा है, उसको क्या करती है? अपनी तरफ, जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है उसको अपनी तरफ क्या करेगी? डाउन। डाउन जो है उसे क्या करेगी? पुल करेगी, और उससे भी क्या आ जाता है? ग्रेडियंट वेरिएशन आ जाता है, स्लोप बन जाता है। तो इस वजह से भी वाटर क्या होगा? फ्लो होगा। तो ये दिस इज द रोल ऑफ द ग्रेविटी इन वाटर फ्लोइंग। क्योंकि जैसे ही पानी, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा फ्लो हो रहा है और ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो वापस क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। और जब वो डाउनवर्ड होगा तो उसकी तरफ क्या, एक सर्कुलेटरी पैटर्न के अंदर दूसरा वाटर अपवर्ड मूव करेगा। सो द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंस एंड कॉजेस द वाटर टू मूव। ये देखिए, कोरियोलिस फोर्स तो जहां भी आएगा तो उसका डिफ्लेक्शन के अंदर ही रोल आएगा। दैट द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंस, Coronary force intervenes and causes the water to move right in the northern hemisphere. So it deflects the water in right direction in northern hemisphere and in left direction in the southern hemisphere. So Coriolis force का role जो है आपके सामने clear है. Now these large accumulations of water and flow around them are called gears. तो गियर्स क्या होता है? ये जो वाटर का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, और इकट्ठा होने के बाद जो फ्लो होना, एक लार्ज वॉल्यूम में फ्लो होना, दैट इज गियर्स। एंड दिस प्रोड्यूसेस लार्ज सर्कुलर करंट्स इन ऑल द ओशियन basins. So let's talk about the characteristics of the ocean currents. So currents are referred by their drift. Currents are referred by their drift. What do you understand by drift? Drift means movement. So current are referred by their drift or movement. So currents are stronger near the surface and may attain speeds over 5 knots. Knots जो है यहाँ पे यूनिट है, आपकी स्पीड के रिगार्डिंग क्या है? यूनिट है। तो आपका जो ओशियन करंट्स है, ये स्पीड 5 knots की क्या कर लेते हैं?
अटेन कर लेते हैं। और करंट्स जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है, डेप्थ के अंदर स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। ये ही लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो कि भाई सरफेस के पास स्पीड, तो फिर स्पीड कहाँ पे कम है, दैट इज इन डेप्थ। पानी जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वहां पे फिर उसका जो करंट का फ्लो है उसकी स्पीड क्या है, कम है, जबकि सरफेस वाटर की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस and may attain speeds over 5 knots. 5 knots here denoting the speed. Here it stands for the speed and knots in the unit of measurement. Unit of measurement. So at depth, currents are generally slow with the speed, and the speed at the depth is 0.5 knots. So we refer to the speed of a current as its drift. So drift is the movement, and we are measuring this movement by speed, that is 5 knots, or unit of the speed is here knots. So drift is the movement measured in terms of knots. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम ओशियन करेंट्स की स्पीड वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। अब हमने बोला कि करंट जो है काफी स्ट्रेंथफुल है, इट मींस वो उसमें क्या है, स्पीड है, उसके अंदर क्या है, स्पीड है, उस करंट में क्या है, स्पीड है। एज अ करंट, फास्ट करंट इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग, a current is usually strong at the surface and decreases its strength with depth because the speed is decreasing. आप जैसे जैसे ओशन के अंदर जाओगे करंट की स्पीड कम होती जाएगी, सरफेस करंट की स्पीड ज्यादा होती है। सरफेस वाले की कितनी होती है, 5 नोट्स, डेप्थ वाले का नियर अबाउट लेस देन 0.5 नोट्स। फास्ट कर हम स्ट्रेंथफुल और फास्ट करंट को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग करंट बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द करंट्स आर स्पीड लेस देन और इक्वल टू 5 नोट्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियन currents. Now the next one, that is differences in water density affect vertical mobility of ocean currents. बेटा इसको ध्यान से देखना, very important. Differences in water density. We discussed about some salinity. Water के अंदर नमक घुला होता है। एक बात बताइए, एक वाटर जिसमें salinity कम है, एक वाटर जिसमें salinity ज्यादा है। तो जिसमें salinity ज्यादा है वो कैसा होगा, डेंस होगा, उसकी डेंसिटी हाई होगा। जब डेंसिटी हाई है तो वो भारी होगा, भारी होगा तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो वो वाटर कहां करेगा, सिंक करेगा। क्या करेगा, सिंक करेगा, डेप्थ में जाएगा। जबकि जो लाइट वाटर है वो कहाँ आएगा, सरफेस की तरफ आएगा। सो अब आप देखिए, एक डेप्थ में जा रहा है, एक सरफेस में रहा है, क्या ये वर्टिकल फ्लो है या नहीं है। सो दिस इज लाइन इज स्टैंड्स फॉर दिस, दैट डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी। मोबिलिटी हियर मींस मूवमेंट, mobility here means movement. So differences in water density affect vertical mobility of the ocean currents. So water with high salinity is denser. We discussed that the water with high salinity, what do you understand by salinity? Salinity is the presence, amount of salt in water is salinity, parts per thousand, इसकी यूनिट होती है parts per thousand, amount of salt in water, that is salinity. So water with high salinity is denser than, water with high salinity is denser than water with low salinity, and in some way cold water, yeah, that too we discussed that warm water कैसा होता है, लाइट होता है, जबकि कोल्ड वाटर कैसा होगा, थोड़ा सा हैवी होता है। तो कोल्ड वाटर हमेशा डेप्थ में जाने के लिए सिंक करेगा, वार्म वाटर हमेशा अराइज करेगा। सो cold water is denser than warm water, so denser water tend to sink, and while relatively lighter water tend to rise. So cold water ocean currents occur when the cold water at the pole sinks and the slowly moves towards the equator. And अब देखिए, हमने जैसे बात की थी कि जब आपकी विंड्स चलती है तो विंड्स में भी आपने देखा था कि विंड्स हमेशा ऐसा नहीं होता कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया चलती है, उसको बैलेंस भी तो करते हैं, एक सर्कुलेटरी मोशन इज गोइंग ऑन। तो दैट्स आल्सो इन केस ऑफ ओशियन करंट्स टू, कि ठीक है आपको दिख रहा है सरफेस में इस तरह से करंट चल रही है, लेकिन उसको बैलेंस भी तो कर रहे हैं, डेप्थ के अंदर एक करंट चल के उसको क्या कर रही है, वाटर को बैलेंस। अदरवाइज तो आप सोचिए एक ही तरफ फ्लो होने से तो पीछे वाला पानी तो कम हो जाना चाहिए, जबकि वो तो बराबर ही बना रहता है, वो फ्लो हो रहा है लेकिन डेप्थ के अंदर वापस सर्कुलेट। जैसे ही सरफेस विंड जब चलती है तो ऊपर से अपर एयर सर्कुलेशन भी चलता है, जस्ट लाइक दैट। सो डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक व्हाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज, कोल्ड वाटर ओशन करंट्स आर। तो आपने जो पोल के पास का एरिया, पोल के पास का एरिया कैसा है, लो टेम्परेचर एरिया, फ्रिजिड जोन। सो देयर द वहां का जो वाटर है वो कैसा है, कोल्ड है, वो सिंक करता है, वो सिंक होके डेप्थ के अंदर किसकी तरफ आता है, इक्वेटर की तरफ आता है, और इक्वेटर का वार्म वाटर जो है वो किस तरफ जाता है, पोल्स की तरफ जाता है, मिडिल लैटिट्यूड की तरफ जाता है। सो दिस इज अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ओशियन करंट। वर्टिकल आपकी मोबिलिटी जो है ओशियन करंट, और हॉरिजॉन्टल जो है ओशियन करंट। तो अभी इसके अंदर एक चीज और क्लियर हुई, वन मोर थिंग क्लियर हुई है, दैट देयर आर जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक द विंड्स, सरफेस विंड हमने पढ़ा था और एक अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ा, जस्ट लाइक दैट आल्सो ocean currents are also of two types on the basis of depth. On the basis of depth, ocean currents are classified into two types. The first one, that is surface current. The first one, that is surface current, and the second one, that is deep water current. So those currents which are flow near to the surface, that are surface currents, and deep water currents are those currents which are flow at depth. Depth में जो चलते हैं, these are deep water currents. These are deep water currents. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए. Okay, now let's discuss about the surface current. So surface current only constitute 10% of the all the water in the oceans. Only it constitutes 10% because it's हमारा वाटर तो एक यूज मास में तो सारा का सारा कहाँ रह जाता है, डेप्थ के अंदर रह जाता है. और दिस वाटर आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन. तो आपका जो अपर सरफेस से लेके 400 मीटर तक के डेप्थ तक का जितना करंट है, that included under surface currents. Deep water currents make the 90% of the ocean water, and these water move around the ocean basin due to variation in density and gravity. So deep water sink into deep ocean basin at high latitude where the temperature are cold enough to cause the density to increase. तो ये अभी जो हमने पोल्स और इक्वेटर के रिगार्डिंग अभी पढ़ा था कि पोल्स के अंदर वाटर सिंक करके डेप्थ के अंदर इक्वेटर की तरफ चलता है, और इक्वेटर से वाटर किसकी तरफ चल रहा है, आपका पोल्स की तरफ चल रहा है. तो ये उसी को भी वापस रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर टेम्परेचर की बात है, इफ आई क्लासिफाई द ओशन करंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स. द फर्स्ट वन, दैट इज कोल्ड करंट, सेकंड वन, दैट इज वार्म करंट. तो कोल्ड करंट कौन सा होगा, जिसका वाटर का टेम्परेचर कैसा है, आपका लो. और वार्म करंट कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर कैसा है, हाई. तो this classification we will discuss in our next class. Okay, thank you.